हाँ भाई आ गए. Wait a minute. Can you hear me? Hello, Can you hello. hear me? Yeah, Can you hear me? you can? Okay. Yeah, yeah. Can you? Yeah, that's I right. can. I can. I Yes, can. bhai, Abhi will join soon. He's out of home at the moment. I don't know if many of you know or not. He lives in Paris, so he's having job. So he will be back. He will be coming soon. Until then, Mhm. let's try to work. I hope. So, bhai, what Mm. a big news it is that Nagelsmann has been sacked as the Bayern boss. What is your Mm. thoughts? See, I don't find a reason to smack Nagelsmann. I know many of you will say that, yeah, Champions League are also they are doing decent. Last year they went to the semis, if I'm not wrong. They lost to Villarreal. That was kind of unlucky also, many chances they missed. But I don't find any reason. They are still doing more than good enough in Bundesliga. I know there is competition, but the competition will be there, man. If Bayern's objective is that we will win the league by 15-20 point margin, that's not happening every year, right? I don't find any reason. They just want the Super Cup, DFL Super Cup. I don't. Yeah, I know they are out of DFB Pokal, but they are still, man. See, you still have chances in the Yeah, Champions League. You still are in your league. You are in a comfortable position. I find no reason, and I think Nagelsmann was good fit into the squad. I think the squad was quite flexible with Nagelsmann, and I think very wrong choice. If you bring in a manager like Thomas yeah, Tuchel, if you see his resume, Bayern squad doesn't go with his play style. His play style is quite like build up, slow build up, position based, hold up play, counter attacking based football, much like Real Madrid, but a bit different from Madrid, but much like Real Madrid. If you look at Bayern's play style, whether it is Flick or whether it is Nagelsmann, it's always high intensity, high pressing football. yeah, yeah, So if I don't know how they will yeah. fit into it, but it's a tough call. It's a tough call. I don't know. I don't think that it will be very Very easy tough. for him. First, I was it is at the going. He moment will, when I saw that. When I saw the news, I was shocked. What happened? Yeah. First, I saw that Tuchel has been appointed, and then I saw that Nagelsmann has been sacked. And I was like, what happened? Within one day, what happened? It was a big surprise to the Bayern fans even because they also I don't think they him out. He has done also good job I would say. He's not been that successful as Flick has been, but he has done a good job. He has won you. You went to the Champions League semis. What more you want? Last season you won the Bundesliga. I think they won the Super Cup as well. So Mhm. last season and this season also they won it. So what else you want? And to do like they said that without any competition they will win. I don't think it is possible at this point of time with the Dortmund squad the way they have built it. It's not possible that competitionless you will win every time. Absolutely. If you Do look you at your agree? rivals, they have And done Bayern, quite good enough job. Quite good enough job, especially Borussia they have, Dortmund. I think they have made they five, genuinely six have, transfers. They have they done a genuinely have. brilliant job. And Slaughterback is the most successful one. I think he just left. Yeah, what I was saying, Schlotterbeck was the most successful one in the entire season, if you see. So wait, I think Shamata will join, but Schlotterbeck was the most successful one in the entire season. Whatever you will tell, if you want to talk about Schlotterbeck, he was brilliant. Manage itna bhi, whatever I watched him, Schlotterbeck. We can talk about Niklas Sula. Sula was also great. Sula kind of played a senior role, but Schlotterbeck as a youngster also impressed me a lot. I think he has got good attacking abilities also. Sula and Schlotterbeck both. Anthony Modest, I don't think that he was utilized that way, that like which he was done in when he was there with Klon, but now still he is doing decent, well enough. I think Yeah, well enough. So, especially, yeah. Sorry, due to a network issue, I was removed. But mhm. as I said you, that
this is not a good call, I think so, because especially in midway at the business end of the season, if you sack a manager like Sevilla also have again sacked Sampioli. It can be said that yeah, they are in the relegation zone, that is why they can sack. But Bayern have no reason. I don't think they could have done that if they wanted to change the manager. They could have done that in the next season as well. But this season, we don't know what will happen more with Bayern. But yeah, Tuchel is not a bad call as well, as he's a German manager as well. But the question is that will he be suitable to the style of Bayern Munich? So he plays a back three out there. So Bayern Munich have played a lot of times back three under Nagelsmann, but bhai, they are not used to playing every day back three. But Tuchel's main style has been from back three. Like we saw Roberto Martinez last night played back three, which was a new style for uh, Portugal because Portugal never played back three before that. But they had a good one because it was Liechtenstein at the end of the day. But still, so And now I they have think to play. Roberto Martinez, first of all, it was Uh, Liechtenstein and Roberto Martinez. He has time. If you look at that, there is no yeah, major competition right now, national stage yeah, at least. There's no major competition. But now you have brought in Tuchel in the middle of the season. It can go worse even. It is going fine. yeah. Absolutely, it is going absolutely fine. Now I think it can go worse because it will take time. Bayern's playing style is completely different from Tuchel's playing style, and I think Bayern will be out of the title Uh, race. I think they will be out of the title I race. think so. Terrible call. Dortmund Terrible has call, man. now the best chance to win a title at this point of time because the It's a way, terrible call. yeah, It's a terrible call, I don't man. I know. don't Yeah, know why. I don't think the results have influenced this result. I don't think this decision is influenced by the results because if results are the influencing, then I find no reason to do this. It can happen that there was some internal some things which we don't know. Yeah, we have seen he had a fight with Neuer. He also seemed to have a fight with Thomas Muller. Uh, was that the reason behind his sacking? We don't know that. We will find out hopefully in the coming days with the reports. See, Nagels. you can have Hmm, fight. Jose hmm, also had fight with his players, yeah, but that went throughout his career at Madrid. He was not sacked. He played for 3 seasons. He was here for 3, and he was quite successful. Jose was quite successful. You cannot deny the fact. And yeah, Nagelsmann, I don't find, man. Now it's clear. Bayern is not going to win any title this season. It's clear for me. It's a trophyless. It is going to be trophyless. yeah. No, they have won the DFB for Super Cup, so that is another trophy at Man, least. see. Wait a second. DFL Super Cup is a trophy. You will play with 1, 2 sides. It's nothing to be have a credit with. Real Madrid won the Super Cup. It is not even a trophy. It's Super Cup is nobody gives a shit about a Super Cup. In the Super Who Super considers it Cup, I as even think a trophy? Super Cup, Who I even think considers it? he won. I think Barcelona won it. Yeah, This this year they season. won it. I am talking about that. This year they won it. Real Madrid Previous won year. it last year, but we didn't consider it as a trophy because It I is not personally, a as a trophy. Madrid fan, I don't. That's not a trophy. You have two. There's 3 trophies that a team can win. There is the League Cup. That is the See, Carabao Cup is a considerable trophy because more than 8 to 12, at least 20, 24 teams compete for that. That's got a trophy. But if you talk about this Yeah, Super absolutely. Cups, 3, 4 sides, doesn't matter. Bayern, it's a home trophy Four for them. They win it every sides. year. 4 sides, yeah, 4, 5 sides. Maximum 6 sides compete for the trophy. Sometimes even 2 sides compete for the trophy. Sometimes even two compete for the trophy. They win. It's not a trophy, man. There's no competition. Carabao Cup can be Yeah, considered as a trophy. There is a competition. yeah, But in England, if you are a club in England, you have a lot of scope to win a quadruple. You have a best scope, and it will be quite respectful as well. but yeah, at this point of time, it's very much uncertainty in the Bayern camp. I think so. Joao Cancelo, we had a. I've seen the interview of him saying that I didn't even know. I have known now only that Nagelsmann has been sacked from the media, and Nagelsmann himself have not been yet been given any official thing that he has been sacked. As per the Fabrizio Romano, that thing is very much uncertainty going on in the Bayern camp at this point of time, and I think this is not good for Bayern's.
season, and it is very very going to be harsh because if Bayern get knocked out by uh, Man City, there is a big chance of it now, more than 50% after this call. See, Now man, at this point of time, जो भी हुआ ठीक है. Whatever happened, it doesn't matter. But if a coach, I think he's being disrespected here. If you haven't even informed him absolutely, that you have been sacked, and if he's surprised, how can we not be surprised? I am surprised, man. How? Why? You tell me reason I was why like, what he's the hell? unemployed. I think the reason is because Tuchel is unemployed. He's German. That's why they are giving a job. That's another thing. But I don't know why they Yeah, appointed Tuchel. There are many managers, and if they even appointed Poch to the job, Pochettino, it would have been even relevant because Pochettino's play style is quite good. It could have been suited to Bayern's one. I know Pochettino doesn't have a trophy. Man, trophies always doesn't matter. But if you bring in Tuchel right now, and I don't want anyone to sack. Why will you sack a player? It is more than half a season now. Every team yeah. has played 20-23 games right now. Why will you bring a new manager right now? The team is quite fluent. Just And 10 Bayern games have been remaining doing in the it. Bundesliga. Bundesliga is quite short. See, Bundesliga is 5 games less than the other leagues, other top four leagues. Hmm. But still, you still have 10 games in the Bundesliga. You could have waited for that. They could have done well in the Champions League, and I don't think it's done, man. It's But going to be tough. this open, I think, could this open the door of Nagelsmann at Real Madrid next season? What's the question? Repeat. Can you repeat the question? What you said? Could this open the door for Nagelsmann at Real Madrid next season? Um, mm, Nagelsmann. It can, but I cannot say that he will be good or not. Nagelsmann is quite aggressive. Real is not that. See, Real cannot play with that intensity. You know that. We have a quite ace squad. They cannot press like madmen. If they do, in 20 minutes, they all will be exhausted. Less 70 minutes, they cannot play. Napoli can play, Bayern can play, but we cannot. There are other options too. They can look for other options. Poch can be an option. They can look for other options. There are options. Yeah, They can look for lower managers too if they offer the jobs. Conte, if Conte is signed, is mostly Conte as is per sacked, Florentino's. then they can look for. Hello, 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 Yeah. hello. Can you listen? Yeah, Huh. can you hear me? Florentino Hmm. Perez, as per reports, is as per reports is going to offer the job to again to Zinedine Zidane, and I think that could be another call. That could be a good option, isn't it? Zidane, I think Zidane, in place of Zidane, you have many options. Nagelsmann is now being an option. I think Conte will be sacked. Yeah, I think Conte is going to get a sack. Conte can get a sack. Conte will be a brilliant yeah, option. Conte can be a good option. Still, it is a yeah, doubtful one. Nagelsmann, I don't think. No, Madrid, he cannot fit in. Zidane, see, yeah, Zidane played with much more youngsters. Now Madrid squad is quite old. We need much more youngsters. Not that old, but still it's quite old. We have the many experienced players. I know experience is necessary, but they are getting old. I think Modric will retire. Cruz is going to retire very soon. yeah. Modric will retire at the end of the season. Cruz is going to retire. Benzema, 2 or 3, one maximum 2 seasons. You have to look for players, and especially I think we need Bellingham. We need players now. We have to bring players from anywhere. We need a next striker. Endrick is not. See, Endrick is good, but Endrick is just 17 or 16 years old. He is not going to get the first team job that quickly. They Yeah. need. Mariano can be a temporary first time starter. Temporary, 5-6 games he can be for first time. But within that Yeah. time, we need to find another striker. If Yes, we not have. now, 2 seasons later, we have. You have to because Benzema can't be over. Means he can't be over dependent on because I think days and it's very hard to get him play every game of the season like you did last season. It's now I think your Champions League. Can you think? Do you think your Champions League this time there is another big possibility of winning the Champions League of Real Madrid?
See, Real, whenever they are out. Whenever Real wins the round of 16, there are always a possibility that there is always a possibility that Real will win. If Real goes after the round of 16 convincingly. Hi guys, भाई जल्दी आओ. कहाँ Hi हो? guys, jaldi aao. जल्दी आओ, come fast. Next. Yeah, what I'm saying. Whenever they are the quarterfinals, जब भी वो quarterfinals में आते हैं, भाई doesn't matter how they're playing. Uh, भाई Yeah, शनि चढ़ जाती है उनको, कुछ भी खेलने लग जाता है भाई quarterfinals में. And that is the reason also they have won it 15 times. We have won it 15 times. So, no, 14 times. This year it can be 15. I don't know. Why I have no Insta account. See you check out your Insta one. I have sent it if I'm not mistaken. I've sent to भाई see. जल्दी आओ. भाई जल्दी आओ, PSG पे भी बातें करनी I'm, है. huh. I'm going to send. Okay, I'm say resending it. No issue. Wait. And see, there is always a possibility. कम हो ज्यादा हो possibility तो है. थोड़ी बहुत भी हो तो है. This year Yeah, it is gonna be difficult. It is gonna be difficult. Napoli definitely. are there, City are there, I'll but resend the Madrid भाई link. अगर You can check it out. हम्म, और भाई जिस दिन मैड्रिड खेल दे भाई डजंट मैटर आप कितना बढ़िया टीम लेके उतरते हो डजंट मैटर व्हाटएवर हु द हेल आर यू who the hell is manager is who the hell the manager is if Madrid plays nobody is going to stop it if Madrid is in form nobody can stop Yeah, Madrid it's destiny man Madrid is definitely. Madrid in Champions League at least especially in Yeah, Champions League it's not it's very difficult as long as they are in the Champions League you cannot guarantee that you are winning it it's what Pep Guardiola said also. yeah that's what I'm saying We don't win it's every eternal year because Madrid is in it. it is a it is a eternal truth that Madrid are kings of Europe. No doubt about that statement. Yeah. I am proud Ah, to say more that. than that, yeah, they have more. I think they play more better. I think in the Champions League, and I think Carlo Ancelotti's football really suits the knockout style of football, like World Cup, uh, yeah, this Champions League or any knockout style of football where you have to play two knockout games to get to the final, and it shoots a lot more than the La Liga, more than anything else. When you look at Madrid in Champions League and look at in, I'm not saying they played bad in La Liga, they play well. But in Champions League, I don't know what happens. They play unexpectedly well. This amount of expectation, I also even don't have. भाई कुछ भी हो जाता है. Last year, every game they made a comeback, and in final also, I thought they are going to concede 4 or 5 goals, and I don't know from what the hell Courtois did before the final. He stopped every single damn thing. Everything was saved. Once I could not even imagine how many shots Liverpool have taken. I think 10, 12 on target. Ah, How, man? It was in the final. incredible. It's all because of Courtois. All from Courtois, man. Vinicius' goal is not a credit for the final. Like, yeah, we won because of the goal, but it's all goes to this that guy, Thibaut Courtois. No, I know that he's not been that Absolutely. great this season, but still he's a hero. Still he's great. One of the best, if not the best currently. Courtois. Yeah, definitely it goes with it. And along with that, we have also we will talk about PSG later when he comes in. But other than that, reaction to the draw of finals. We have not not yet given your reaction. Please check it out. Yeah, let's talk about it. Chelsea versus Madrid. What are your thoughts on this? Hmm. Good game. Good game. It is gonna be a good game. Both sides are see. Abhi Chelsea and joins. Madrid both Oh, are. he joins. Yeah, he is here. I think he's here. Hello, bhai. Hello, hello, हेलो 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 क्या हाल है आपका? hello. सब अरे ठीक है, सॉरी सब ठीक लेट है. हो गया यार, थोड़ा सही सा है अभी. बिजी था इसलिए Yeah. ठीक है, चलता है, चलता है. इसलिए चलता है, कनेक्ट it's नहीं हुआ. okay. Okay, okay, okay. कामरो Okay. तो फिर से बोल, तो क्वेश्चन भाई बोल फिर पहले से. हम अब ये पीएस हाँ पीएसजी के बारे में थोड़ा बात करते हैं भाई पीएसजी आप तो पीएसजी सपोर्टर है तो भाई आपको क्या लगता है हम्म. पीएसजी हर सीजन ऐसे क्यों हार्ट ब्रेक होकर आउट हो जाती है अरे भैया यार, चैंपियंस लीग से आते ही आपने हमला शुरू कर दिया है. कोई नहीं कोई नहीं,
यही हमारा काम है, हम सपोर्टर्स का। तो इसका साफ आंसर है यार, मैनेजमेंट बेकार है, प्लेयर्स बेकार नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट मतलब विजन नहीं है कोई। मैं अपनी हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि पीएसजी का कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, वो शॉर्ट टाइम चलते हैं। अभी लियोनेल मेसी को चलो ओके, ही इज लेजेंड, ही इज गुड, बट उसको लाने का कोई मतलब नहीं था यार। ही इज 35 36, एक दो साल में मतलब कि यार, आई डोंट नो वेयर आई सी दिस कमेंट कि फ्रांस में मतलब कि नंबर टॉप प्लेयर्स यार मैन्युफैक्चर करती है फ्रांस। हम सबको पता है कि हर लीग में फ्रेंच प्लेयर शाइन करते हैं। मतलब पीएसजी सुपरस्टार्स लेकर आती है। ये क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आता यार। तुम्हारे घर में इतने टैलेंटेड यंग यंग टैलेंट बैठा हुआ है, तुम लोग उस पर फोकस ना करके तुम लोग सुपरस्टार्स पे फोकस करते हो, जो कि आके पीएसजी के कल्चर में जो कि मिल नहीं पाते। पीएसजी का कल्चर एक ऐसा है, जैसा यार अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आरसीबी का है ना, जो स्टार्स हैं, पार्टीज कर ली, ये कर लिया, घूम फिर लिए, कोई मतलब स्पोर्टिंग रीजन नहीं कुछ दिखता है। इसका आंसर यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। आप एब्सोल्युटली। देख लो, पर भाई 2014 के बाद से, एक सेकंड, 2014 के बाद से, मोटा और मैटुइडी के जाने के बाद से मिडफील्ड में इतनी इंस्टेबिलिटी रही है। आज तक मुझे स्टेबल मिडफील्ड दिखी नहीं। वेराटी को छोड़ के कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो कॉन्सिस्टेंटली खेल दे। वेराटी तो खेल तो रहा है भाई कॉन्सिस्टेंटली, अच्छा राइट राइट असिस्ट वाइज शीट पे तो खेल नहीं रहा है, बट पिच पे दिखा तो रहा है, कोशिश तो कर रहा है क्लब के लिए। आपने 4 साइनिंग कर लिए मिडफील्ड में, कोई और साइनिंग ही नहीं किया आपने कहीं पे। सारे मिडफील्डर, सोलर को उठा लिया आपने, सैंचेज को उठा लिया आपने, फैबियन रुइस को उठा लिया। इतने प्लेयर्स कहाँ रखोगे? आपने हुगो एकेटिको को लिया है एज अ स्ट्राइकर, वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स था वो फ्रांस में। उसने फ्रेंच टैलेंट लिया था लीगा से, खिलाया ही नहीं इस सीजन। दिखाओ कहाँ या खिलाया उसको, खिलाया नहीं, गेम टाइम दिया ही नहीं उसको। आपके बढ़िया प्लेयर्स थे, किंग्सली कोमन भाई उसको निकाल दिया एकेडमी से, माइक मैग्ना निकाल दिया एकेडमी से, उनके एकेडमी स्टार्स को नहीं खिलाया। और यहाँ पे 800 मिलियन स्पेंड होते जा रहे हैं 2017 के बाद से। हाँ भाई, वो तो 800 बता दो मिलियन थोड़ा। स्पेंड हुए हैं, 800 मिलियन। वही वही भाई कि मतलब यार स्पोर्टिंग विजन, वही वही बात कर रहा हूँ ना हाँ कि आप साइनिंग्स कर रहे हो, वो भी पैसा बर्बाद कर रहे हो। कहने का मतलब कोई अच्छी साइनिंग्स नहीं लेकर आ रहे हो। उनको मिडफील्ड का पता ही नहीं है यार। अगर आप नासिर को जानते हो ना, अगर जो हमारा ओनर है, प्रेसिडेंट है, ही वॉज अ टेनिस प्लेयर यार। वो एक टेनिस प्लेयर है खुद, उसको तो फुटबॉल का कोई नॉलेज भी नहीं थी। उसको बस ये कि कतर्स के ओनर्स, उसका जो प्रिंस था उसका भाई है, आई थिंक ही विल गेट चेंज नाउ। ये इसकी पोस्टिंग कर देंगे वो यहाँ से किसी का, पर ओनर्स विल बी सेम, बट प्रेसिडेंट चेंज कर देंगे। तो मैं ऑनेस्ट, दिस इज गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर आई थिंक। तो उसके बाद शायद मेंटेलिटी चेंज हो, क्योंकि अभी मेंटेलिटी नहीं है यार। सिर्फ फेम लेने की मेंटेलिटी है, पैसा बनाने की मेंटेलिटी है। क्लब के लिए बहुत अच्छा है, क्लब ग्रो कर रहा है। एंड एज वी नो कि यार आज से 4 5 7 साल पहले कितना फेमस था पीएसजी। आई डोंट थिंक तो कि इस लेवल पे था जो आज है। तो उनकी जो पॉलिसी है, उनका जो विजन है, जो मिशन है उनका, वो तो वो कर रहे हैं। बट फॉर फैंस जो जो सपोर्ट करते हैं पेरिस को, उनके लिए हर्टफुल है यार। ये ऐसी मैनेजमेंट हमें नहीं चाहिए जिनका विजन सिर्फ पैसा हो। बट क्योंकि यार फुटबॉल इन फ्रांस इज लाइक इन यूरोप, आई वुड से कि क्लब्स के लिए दुनिया मरती है, लोग मरते हैं क्लब्स के लिए। तो वो पैशनेट जो फैन है पीएसजी के, उनको बहुत हर्ट होता है और उनको ये सारा क्रिटिज्म सुनना पड़ता है बाकी लोगों से, जो कि इतना क्रिटिसाइज करते हैं पीएसजी ये पीएसजी वो। तो उनको हर्ट होता है। अदरवाइज पीएसजी के वैसे फैंस नहीं है जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड, बारसा, रियल के जो लॉयल फैन है, जो हिस्ट्री है, क्योंकि उनको उनके पास हिस्ट्री है तो कॉन्फिडेंस होता है। हमारे पास हिस्ट्री नहीं है, इसीलिए लोग आके ट्रोल कर देती है पीएसजी को। पीएसजी को ट्रोल करना आसान है। और और हमारा क्लब सिर्फ यार 53 ईयर्स ओल्ड है, 1970 में फाउंड हुआ था। तो खुद लगा लो कितनी हिस्ट्री होगी। तो ऑलरेडी इतने कम टाइम में हमने इतना नाम बना लिया, तो होप्स हो कि आगे इनकी मेंटेलिटी चेंज हो और ट्रॉफी आनी शुरू हो जाएगी। बस इनको टीम बिल्डअप करनी पड़ेगी। देखो या भाई, कतारी ओनर्स ने थोड़ा तो हाँ बेनिफिट भाई, किया है। एक क्वेश्चन है कि मेसी क्या, रुको रुको रुको, बताओ हाँ बताओ, पूरा तो वो तो तुम है। बता दो, बताओ बताओ बताओ, क्या क्वेश्चन आपको था? क्या लगता है भाई, मेसी मेसी हाँ, मेसी को एक्सटेंशन देना चाहिए? अभी थोड़े दिन तक पहले तो लग रहा था कि नहीं, मेसी रुक सकता है, रुक सकता है, क्योंकि उसने यार वर्ल्ड कप जीतने के बाद उसने खुद ही बोला था कि ही वांट टू स्टे 1 मोर ईयर। क्योंकि वर्ल्ड कप जीता है पीएसजी को, उसने अपने आप को कहीं ना कहीं पे ना लकी कंसीडर किया है, चाहे जो मर्जी हो। लेकिन उसने बोला था, लेकिन अभी जो यार पीएसजी में जो
फैंस ने, सो कॉल्ड अल्ट्रास ने बू किया है, जो उसके बाद जो उसका मूड खराब हुआ है, एंड नाउ ही इज इन अर्जेंटीना। आप सबने देखा होगा कि क्या यार उसका वेलकम किया है टीम का, ही वाज इन टीयर्स आल्सो। तो वही एक इमोशनल हाँ बॉन्ड है सर। जो आई थिंक ही कैन थिंक या नाउ कि मुझे यहाँ पे दिल नहीं लग रहा है यार, जहाँ पे दिल नहीं लग रहा है तो ही शुड नॉट स्टे, और वो अर्जेंटीना में मे भी जा सकता है वापस, क्योंकि हमको वो पता है कि कितना अपनी कंट्री की तरफ, मतलब कितना पैट्रियट है वो। तो मे बी ही कैन गो बैक देयर एंड कंट्रीब्यूट फॉर हिज कंट्री नाउ। और उसको बहुत प्यार मिल रहा है यार, वो बंदा प्यार का भूखा है, बहुत प्यार मिल रहा है उस बंदे को। हाँ, सो पीएसजी तो चाहेगी यार एक्सटेंशन, क्योंकि पीएसजी का आपको फिर से पैसा ही आ जाता है, उनको तो पैसा ही चाहिए। तो दे वांट कि मेसी यहाँ पे रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केटिंग के टर्म में मेसी एक बहुत बड़ा नाम है फुटबॉल वर्ल्ड में। तो इट्स डिपेंड अपॉन देम कि वो कैसे नेगोशिएट करते हैं, कैसे हाउ इट प्लेज इन लाइफ। भाई मुझे पता है कि जो जी। और है भाई ना पीएसजी एम्बापे की के तरफ। बारे में क्या बोलेंगे? एम्बापे के पीछे बताओ। एम्बापे, और आप क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं यही बता रहा था कि पीएसजी का जो है, पीएसजी हाँ का जो भाई। मुझे अभी दिख रहा है एज अ मैड्रिड फैन, हाँ एज अ जी, क्लोज ऑब्जर्व मैं क्या कर बोल रहा रहे हूँ, कटारी ओनरशिप मुझे पूरी गैलेक्टिकोस एरा की याद आती है मुझे देख के। मतलब आपके एग्जैक्टली। पास प्लेयर्स है, आपके पास कोई डिफेंसिव माइंड प्लेयर नहीं है। आप गुटी और बेकम को खिलाते थे एट बैक, मुझे अभी भी याद है। मैंने कभी कुछ मैचेस के फॉर्मेशन देखे थे, गुटी और बेकम को बैक खिलाते थे। मैकेलेले को आउट कर दिया था, रीजन क्योंकि स्टार खिलाने हैं। अभी भी वही चल रहा है। बस लीग जीत रहे थे तब, रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग बहुत कम जीतती थी, कभी कभार जीत गई और कभी कभार शायद गोल मार दिए, और फिर तो फेल हो गया। और इट विल फेल मैन, कभी ना कभी तो बंद हो ही जाएगा। कितना दिन चलेगा You आपको। can relate to that to some extent, हैं? but in terms of money, we are much more better than that. We have grown. Otherwise, mentality के हिसाब से आप बोल सकते हो कि it is like that. और अगर आपकी बात करें कि एम्बापे इज गोइंग टू स्टे हियर, वो फ्रांस में टाइम लेगा, एंड फ्रेंच लेजेंड बनना है। ऑलरेडी इज अ फ्रेंच लेजेंड, बस उसको और भी प्रूव करना है। और अगर जाकर भी रिया, उसको भी पता है कि अगर रियल के साथ जाके वो चैंपियंस लीग जीते तो उतना मजा नहीं आएगा जो कि चैंपियंस लीग वो यहाँ पे जीते, चाहे 3-4 साल में जीत जाए। तो आफ्टर ही वांट टू बिल्ड हिज टीम बाय हिमसेल्फ, कि अभी फ्रेंच कल मैं, हाँ, कल की बात है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था मैं। तो वहां पे भी उसने यही बात की कि नाउ इज कैप्टन ऑफ फ्रांस। तो मतलब कि उसका वही नेशनलिज्म आ जाता है, क्योंकि आपको पता है फ्रेंच लोगों का भी यही है कि अपनी कंट्री के लिए जब खेलते हैं और जब क्लब के लिए खेलते हैं तो दे आर नॉट सेम। फॉर एग्जांपल डेम्बेले, ग्रीजमैन और एम्बापे, ओके ही प्लेज गुड फॉर पेरिस, बट Frenchmen, they want to contribute to their countries as well before, like in terms of clubs also, I think. अरे ये या न्यूज क्या है यार नैगल्समैन की, तो मैं तो भाई शॉक हो गया। अभी, हाँ हाँ, नैगल्समैन के हम लोग भाई, नैगल्समैन को सैक कर दिया है बायर्न ने, और थॉमस तुचेल एग्जैक्टली। को नया मैनेजर किया है। भाई आपका क्या थॉट्स है इस थॉट्स कुछ नहीं, मुझे तो लग रहा है कि बस पे? लड़ाई हुई है। अदरवाइज देयर इज नो अदर पॉसिबल रीजन की, जेन्युइन रीजन की उसको सैक किया जाए। देयर आर सम देयर वाज समथिंग रॉन्ग, क्योंकि टुकल को भी एकदम कांटेक्ट करना और उसको एग्रीमेंट करना, क्योंकि टुकल की बात हो रही थी कहीं और क्लब्स में भी। तो आई डोंट थिंक कि एक रात में या एक दिन में ही हुआ है। इट वाज लाइक नैगल्समैन को शायद नहीं पता था, मे बी समथिंग हैपन यार, वी डोंट नो। हम कुछ कह नहीं सकते हैं इस चीज पे, बट देयर वाज सम रिफ्ट गोइंग इनसाइड द ड्रेसिंग रूम बिटवीन या मैनेजमेंट, मे बी प्लेयर्स आल्सो, क्योंकि उसके प्लेयर्स के साथ भी रिलेशन खराब हो रहे थे। हाँ, स्पेशली मानुएल नॉयर और थॉमस मुलर के साथ ऑलरेडी न्यूज आ चुकी थी कि उसका रिलेशन अच्छा नहीं है, और किमिच को उसने कैप्टन बनाया था, दैट वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय द ड्रेसिंग रूम। हाँ, वो हो सकता है बिटवीन। कैंसेलो का क्या होगा? आपके थॉट्स क्या है इस पे, कैंसेलो पे? कैंसेलो इसके लिए हाँ छोड़कर आया कि भाई, नागल्समैन वहां पे ही लाइक टीम, और उसको गेम टाइम भी नहीं मिला, कैंसेलो, और अभी नेक्स्ट मैच कैंसेलो मैनचेस्टर सिटी के साथ।
और वापिस उसको जाना है, जो नहीं जाना है, अब उसका फ्यूचर क्या है, उसका आप हाँ क्या सोचते हो उसके फ्यूचर? भाई, कैंसेलो तो पूरा फंस गया है यहाँ पर। मतलब उसको गेम टाइम भी उतना नहीं मिला जितना मैनचेस्टर सिटी में, इससे तो ज्यादा ही मुझे लगता है मिलता था। हाँ, रिको लुइस को स्टार्ट कराते थे, पर ही वुड यूज्ड टू गेट सम गेम्स। बट यहाँ पर तो उसको रोज गेम टाइम तो नहीं मिल रहा है जो जिसके लिए वो यहाँ पर आया है। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। अलोंग विद दैट, भाई नया मैनेजर है, अब नया थॉट्स है, अब वो क्या करेगा, वी डोंट नो व्हाट तुचेल विल डू विद हिम। एंड मुझे लगता है वो फिर से वापस पेप के टीम में ही जाएगा। और अगर मैनचेस्टर सिटी को लगा कि उसको सेल करना है तो समर में आई थिंक कैंसिलो कुड बी अवेलेबल। और भाई आई एम ऑडिबल? या नेपोली के बारे में। हाँ हाँ हाँ, यस। भाई नेपोली के बारे में थोड़ा बात कर रहे थे। भाई आपको क्या थॉट्स है नेपोली जैसा खेले? और नेपोली हैज अ बिग चांस ऑफ गोइंग टू द फाइनल्स ऑफ द यूएफए चैंपियंस लीग दिस ईयर। इसके लिए एक क्वेश्चन भैया के लिए, हाँ, कौन है आप बताओ, आपके थॉट्स क्या है पहले? आई वाज थिंकिंग इट्स फॉर यू। किसके टूचेल के अपॉइंटमेंट में उसमें हमने बात कर ली थी इससे पहले, आपके आने से पहले। नो नो, दिस ना वन ना, अबाउट नापोली। नेपोली 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 नापोली, नापोली के बारे में नेपोली। देखो यार, स्पेलेटी आने के बाद तो काफी चेंजेस हुए हैं, आप अगर बात करो या ना करो। स्पेशली जो सबसे बड़ा मुझे चेंज लगा, रूबिन कजान से वो डायनामो बिटूमी में गया था, उससे वहां से लेके आए थे उसके नेटिव कंट्री से क्विचा कवाश्केलिया को, जॉर्जिया से। इतना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था खेल जाएगा, अलग ही खेल गया। फिर आपका विक्टर ओसिमन इस साल तो टॉप फॉर्म में है। एंड स्पेशली मारियो रूई, मैंने इतने साल से उसको देखा है, पर इस साल दे आर ऑल्सो एक्सपीरियंस प्लेयर्स ने स्टेप अप किया है, जो सबसे बड़ी बात है। लोबोट का काफी बढ़िया खेल गया, एंगुइसा दोनों रोल्स में खेल रहा है भाई, सीडीएम में कभी कैंप पे, बढ़िया खेल रहा है। जिलिंस्की एज ऑलवेज काफी बढ़िया खेल रहा है। एंड देखो, सीरिया आई थिंक दे शुड विन। ये नहीं हो सकता, 15-16 पॉइंट का गैप है, 13-14 पॉइंट का गैप है शायद, नहीं ड्रॉप कर सकते इंटर की। इतना बड़ा गैप अगर ड्रॉप हो गया तो नथिंग टू से, और नहीं करेगी भाई, काफी बढ़िया खेल रही है नेपोली। चैंपियंस लीग में इट्स डिफिकल्ट, रियल है अभी भी, आपके पास सिटी है। सो चैंपियंस लीग में बात नहीं कर सकता कि चैंपियंस लीग जीतेगी नहीं। बट या नेपोली ने तो काफी चेंज दिखा है, स्पेशली आफ्टर स्पेलेटी एफ गेम। इससे पहले था, मतलब ठीक ठाक थी नेपोली, मतलब मिड टेबल टीम थी, कभी ना कभी तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो जाती थी। लास्ट ईयर दे फिनिश फिफ्थ, टॉप फोर में रहती थी। बट आई थिंक इट्स ऑलवेज बिकॉज ऑफ जगह देम दे लॉस्ट। इंटरनेट का होगा कनेक्शन। आपको आ रही है आवाज? हाँ, हमें आ रही है हाँ हाँ, आवाज। आ रही है। नहीं। मैं, अगर नेपोली की बात करें, आपका शायद वो ऐसा डिस्कनेक्ट हो गया था मेरी। अगर हम्म। मैं बताऊं नेपोली की, आई थिंक कि हमने उनको सीरिया में उनको अभी तक देखा है, एंड चैंपियंस लीग में उनको इतना टफ कंपटीशन नहीं मिला। दे हैव सीन सम टफ टीम, टफ मैचेस, बट उस हिसाब से उनको कंपटीशन नहीं मिला है। चैंपियंस लीग पे जज कर नहीं सकते हैं, मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर आप उनका रिसेंट मैचेस देखो ना, वर्सेस मिलान भी, जो कि जिनके साथ अभी उन्होंने खेलना भी है चैंपियंस लीग में, एक और लीग मैच भी खेलना उन्होंने सीरिया का, तो उसमें वो स्ट्रगल किए थे कहीं ना कहीं पे। अगर आप हाईलाइट देखे हो, दिल मिलान हार गया था 2-1 से, बट नेपोली को उन्होंने बहुत डोमिनेट किया था, एंड जीरो हिट 2 टाइम्स क्रॉसबार, और डिफेंसिवली भी अच्छे थे। बट दैट वाज अ सिली मिस्टेक कि जो विक्टर ओसिमन ने गोल किया उस मैच में, तो दे वोन बाय 2-1। और मैचेस की बात करें, वी कांट, मतलब कि जब टफ टीम्स आ रही है तो कहीं ना कहीं नेपोली स्ट्रगल कर रही है, बट सीरिया में उनको वो टफ कंपटीशन मिला नहीं है। तो आई थिंक मेरी प्रेडिक्शन भी यही थी कि मिलान में और नेपोली में, मिलान आर गोइंग टू द सेमीफाइनल। तो आई डोंट थिंक कि so many people will agree with me, but आई थिंक लाइक दिस, क्योंकि मिलान यार, अगर ओके, रियल मैड्रिड भी हम हर साल बोलते हैं कि अच्छी टीम है, दे विल नॉट विन, दे विल नॉट विन दिस ईयर, बट वो जीत जाते हैं, कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं, क्योंकि उनके पीछे यार ट्रॉफीज बोलती हैं। तो इनके पीछे भी 7 ट्रॉफीज हैं, हालांकि ओके काफी साल पहले की है, वो पुरानी है, बट 3 इटालियन टीम्स, इससे हमें पता लगता है कि सीरिया का लेवल बड़ा है। तो कहीं ना कहीं पे और मिलान उसके चैंपियंस है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि मिलान जीतेगी, या नेपोली
tactic wise आई थिंक दे आर नॉट गोइंग टू बीट मिलान। और अगर इंटेंसिटी की बात करें, उनका हार्ड वर्क की बात करें, देयर स्टेमिना इन टर्म्स ऑफ पेस एवरीथिंग, नेपोली आर मच बेटर देन एसी मिलान, बट it will be a Yeah. tough match I think for them. Let's see. Let's see. Benfica has a big chance to go into the semi-finals or finals even. भाई बेनिफिका आर हैविंग अ वेरी, आई थिंक बेनिफिका ही जाएगी मुझे लग रहा है इंटर मिलान को हराकर। आपको क्या लगता है इसमें? वी Inter टॉक Milan, फुटबॉल। हाँ Inter Milan, बेनिफिका अगेन अगेन एक सीरिया की टीम, एंड उसमें यार दे आर नॉट इन दैट मोमेंटम की हर मैच जीत रहे हैं, तो मैच हार रहे हैं, एक जीत रहे हैं, एक जीत रहे हैं तो अगला हार रहे हैं। दे डोंट हैव दैट इंटेंसिटी इन देम आई थिंक। और बेनिफिका, दे हैव बीन कांस्टेंट थ्रू आउट द, उनका भी मेरे ख्याल से 10 पॉइंट्स का गैप है between first and second place. They are leading the Portugal league, I think, if I'm not wrong. So they are very much या constant, and uh, again close encounter, and Inter Milan वहीं पे लैग करेंगे, उनकी इंटेंसिटी, एंड लुकाकू इज नॉट इन दैट ग्रेट फॉर्म। उनका जो मेन स्ट्राइकर है, एंड जब आपका मेन स्ट्राइकर ऐसी फॉर्म में ना हो और ही इज आउट ऑफ फॉर्म फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, तो मुझे नहीं लगता है कि यू आर गोना मेक इट इन चैंपियंस लीग। क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा स्ट्राइकर हो, that's why I am not. I don't consider Bayern Munich as a favorite of the Champions League, क्योंकि यार उनके पास जो स्ट्राइकर है चोपो मोटिंग, यू कांट, आई एम नॉट इंसल्टिंग क्योंकि उसने गोल किया है हमारे खिलाफ भी, पीएसजी के खिलाफ भी, बट he have won them a lot of matches, but Chopo Moting you can't win, he will choke in some moments। हमारे खिलाफ भी उसने काफी चांस मिस किए थे, ओके ही स्कोर्ड, बट पीएसजी के खिलाफ उसने चोक किया था कई अच्छी मूवमेंट्स पे। तो मुझे लग रहा है बड़े मैचेस में आके लुकाकू के साथ भी ये होएगा, एंड इंटर मिलान का मेन रीजन भी वही होएगा कि लुकाकू कांट फिनिश एज अ नंबर 9। तो आई एम गोइंग विद बेनिफिका, क्योंकि उनके पास वो कंसिस्टेंसी है, उनके पास डिफरेंट गोल स्कोरर्स हैं, and they are I think they have almost won the league of their own country. Interesting. या आपसे अगर हम बात कर ले यहाँ पर, तो पहले हम फिर से बात कर लेते हैं रियल मैड्रिड और चेल्सी के बारे में। वी टॉक फुटबॉल को भैया, क्या लगता है आपको? What can you repeat, please? रियल मैड्रिड और चेल्सी के बारे में क्या लगता है, कौन जीतेगा? रियल और चेल्सी, एक्चुअली मैंने ना आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा, मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्शंस की एक वीडियो बना दी थी, तो उसमें भी आई हैव गॉन विद चेल्सी। चेल्सी को देख रहा हूँ क्योंकि एज इन 2021 आल्सो इट वाज द सेम सिनेरियो कि चेल्सी अपनी लीग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, but they were having some players who actually want to win, and at that time it was Tuchel there this time, you know, और उस टाइम चाहते थे चैंपियन लीग जीते क्योंकि लीग उनके हाथ में नहीं थी, सेम लीग, और इनके पास डेप्थ है यार उस स्क्वाड में। कितने, 3 टीमें, मैंने सुना 3 टीमें बना सकते हैं चेल्सी, और दे विल बी ब्रिलियंट। वो किसी भी टीम के साथ कम्पीट कर सकते हैं वर्ल्ड में, कि ऐसे प्लेयर्स हैं उनके, हर पोजीशन पे 3 प्लेयर है, तो दैट विल प्ले अ रोल। और अभी रिसेंट टाइम में देखिए ग्राहम पॉटर ने काफी अच्छे रिलेशंस बना लिए हैं अपने प्लेयर्स के साथ। पहले जो नहीं दिख रहा था, जो चैंपियंस लीग का मैच था उसमें जो उसने एक इमोशनल चीज दी थी फुटबॉल से हटकर, उसने जो एक अटैचमेंट बनाई थी अपने प्लेयरों से, तो उसकी वजह से काफी लोगों का मानना है कि अपना वो डॉर्टमुंड के साथ उन्होंने कम बैक किया, एंड आफ्टर दैट दे स्टार्टेड टू विनिंग द लीग। तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करेगा वो रिलेशनशिप, और जो उनकी जो नई केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। और इसीलिए मुझे ये भी लग रहा है कि ग्राहम पोटर को टाइम और ज्यादा मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे मनी का भी रोल आता है कि अगर वो उसका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश करे तो प्रॉब्लम आएगी। तो ऑल दीज थिंग्स विल प्ले अ रोल इन चैंपियंस लीग आई थिंक, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कुछ ना कुछ चैंपियंस लीग में कंट्रोवर्सीज आती हैं। तो अगेन आई थिंक आई एम चेल्सी आर गोइंग टू सेमीफाइनल। या और आपकी प्रेडिक्शंस क्या हैं इसके लिए? या एब्सोल्युटली। हाँ भाई, मुझे लगता है भाई रियल मैड्रिड जाएगी,
बिकॉज भाई रियल मैड्रिड तो अच्छा नहीं खेले लीग में, सेम चीज है। पर भाई रियल मैड्रिड का एक है जो चैंपियंस लीग का है, वो मेरा फ्रेंड भी ये रियल मैड्रिड ही सपोर्टर है। बट हाँ, रियल मैड्रिड भाई मुझे लगता है रियल मैड्रिड जाएगी। हाँ चले जाएगी भाई, मुझे लगता है रीजन भी है। सॉरी सॉरी भाई, चेल्सी ने सॉरी इतने कितने, सारे, बट मुझे नहीं पता था आप मैड्रिड फैन हो, इसीलिए बोल दिया, बट दैट वाज माय ऑनेस्ट ओपिनियन, यू नो। नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है, ऐसा हो सकता है, बट मैं देखो इम्पार्शियली बात करूँ, चेल्सी ने इतने सारे साइनिंग्स कर लिए हैं और मुझे आधे साइनिंग्स के पॉइंट भी नहीं पता, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं उन लोगों ने मिखाइल मुड्रिक को क्यों साइन किया। मुझे जुआ फेलिक्स को साइन करने के बाद आपने मिखाइल मुड्रिक को साइन किया, मुझे उसका मतलब अभी तक उसका रीजन पता नहीं चला। आपने डेविड रेट्रो फोफाना, मतलब उनके पास स्ट्राइकर्स, हाँ भाई डेविड रेट्रो फोफाना को साइन किया उन लोगों ने, उनके पास स्ट्राइकर का अबंडेंस हो गया, इतने सारे स्ट्राइकर्स उनके पास, ब्रोहा है अभी, 4-5 स्ट्राइकर्स उनके पास, काफी जगह पे वो लैग कर रहे हैं, दे कुड हैव गॉन फॉर गोलकीपर इंस्टेड, दे कुड हैव गॉन फॉर गोलकीपर इंस्टेड, केपा की जगह पे आपने इतने सारे प्लेयर्स उठा के ला लिया, आप गोलकीपर ले लेते एक बढ़िया से। और गेम स्टाइल की भी बात करूं, किसको खिलाएगा भाई, पॉटर एक दिन एक को खिला रहा है, दूसरे दिन दूसरे को खिला रहा है, मुझे कैसे पता। चेल्सी का लाइनअप प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है भाई, ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल है, वो कुछ किसी को भी खिला देगा। कल बेटिनेली को उतार उतार देगा भाई, मार्कस बेटिनेली को बी टीम से उठा के गोलकीपर में उतार देगा वो, पता नहीं भाई। इसका एक स्टेबिलिटी नहीं है टीम में, अगर आपकी टीम स्टेबल नहीं है तो कैसे केमिस्ट्री बने। तो आई थिंक वहां पे हार जाएगी, क्योंकि अब जीत भी सकती है चेल्सी, चेल्सी तो शॉक कर ही सकती है, चेल्सी ने 2021 में सबको शॉक कर दिया, इस बार भी शायद शॉक कर दे, वी विल सी, वी विल सी। हो सकता है। है। अभी मैच से लेट्स सी पहले भाई। कुछ और नहीं भाई बोला आज का है। ठीक है भाई, आगे रियल चलता है सब। मैड्रिड के फिर बोलते नहीं है, देखा आपने? भाई, ये ओके बाद में बोलते भाई। हैं जीतने के बाद। ठीक है चलो। हाँ, तो भाई दैट्स इट फॉर इट। आज इतना ही करते हैं भाई। मुझे काम है, अभी जाना है। तो थैंक यू वेरी यस, मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू फॉर और भाई लिसनिंग। जिन लोगों ने भी वी टॉक फुटबॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है, do subscribe and subscribe to थैंक यू MO70 यस, Football Talks and subscribe to SC7 That's Football also. Like this stream and share as well to football fans. That's it. Thank you. बाय बाय। बाय गाइस।